Welcome friends on YouTube channel Knowledge City with Guruji. Now let's start our today's topic. Today topic for class 10th polynomials. First, introduction of zeros, and second, relationship between zeros and the coefficients of polynomials. Students, today we will discuss the zeros of a polynomials. Polynomials we have already discussed in the previous classes. Polynomials means the many terms, expression made by the many terms. But in this chapter, in this exercise, especially we have to focus on a quadratic polynomial, x square plus bx plus c. Quadratic polynomial. Quadratic क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे इसे? Because quadratic have the power of variable 2. वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है बच्चे? 2. So that is a quadratic polynomial. So we have to write the zeros of quadratic polynomial. Now what's the meaning of zeros? It is very simple, very clear notation. The such value of x which gives the result of polynomial as a zero. यानी x का ऐसा वैल्यू जो हमें रिजल्ट क्या दे, पॉलिनोमियल का जीरो दे. दैट इज कॉल्ड द zeros of the polynomial. वो हमारा पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? जीरोस कहलाएगा. For example, suppose we have given a polynomial fx in the form of 4x square plus 4x plus 1. Okay, 4x square plus 4x plus 1. It is your given form of a quadratic polynomial. यहाँ पे हम x का क्या वैल्यू पुट करें कि हमें रिजल्ट क्या मिले, उसका जीरो मिले. The such value of x which gives the result zero. So let we put here x is equals to minus 1 upon 4, 1 upon 2, minus 1 upon 2. So in the place of x minus 1 upon 2, 4 minus 1 upon 2 the square plus 4 minus 1 upon 2 plus 1. So minus 1 upon 2 the square, 1 upon 4. Here 2 divided by 2, minus the 2 plus 1. So 1 minus 2 plus 1 give the result 0. So x equals to minus 2 is the zeros of your quadratic polynomial. Let me example. Suppose px is equal to 2x square minus 8x plus 6. We will try to put here values, some values, and check out if that gives the result 0. अगर कोई वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या आता है? 0. So that is called the zeros of the polynomial. For example, x equals to 1. So p1 2 1 the square minus 8 into 1 plus 6. What will be the result here? 0. Let x equal to 2. So p in the place of x2. So 2 into 2 square minus 8 into 2 plus 6. So what will the result here? Result we obtained the 14 is not a 0. X equal to 3. P3 equal to 2. 3 the square minus 8 into 3 plus 6. Again result the 0. So at the value x equal to 1 and x equal to 3, we obtain the result of polynomial is a 0. So these are called the zeros of the polynomial. ये दोनों वैल्यू 1 और 3 क्या है इसके लिए? zeros of the polynomial. While at x equal to we don't obtain the result 0, so that is not the zeros of the polynomial. So zeros of polynomial means at the value of a x which gives the result of given polynomial as equal to 0. वो हमारे क्या कराएंगे? zeros कराएंगे. And how many zeros are available here? It is important. In the quadratic equation, there are the degree of a polynomial is 2. So there are the number of the 2 zeros will be possible. As the degree of polynomial, जितनी polynomial की डिग्री होती है उतने ही उसके सॉल्यूशन प्रेजेंट होंगे, उतने ही उसकी zeros प्रेजेंट होंगे. Is that clear? Let's one more example. Suppose a polynomial px equals to 4x square plus 8x. It is also a quadratic polynomial. The degree of a x, the power of x is a 2. Okay, but it has only 2 terms. So let
x equal to 0. So what about the result? 4, 0 the square plus 8 into 0 give the result 0. Let x equal to minus 2, p minus 2 in the place of x. So 4 into minus 2 the square, 8 into minus 2 give the result 0. So again we obtain the two values of zeros, x equal to 0, x equal to minus 2, because it has the degree of a variable 2. Polynomial की degree कितनी student 2. So we obtain the two zeros, two result of the x. So 0 and minus 2. So that is your process to finding the zeros of your polynomial. So 0 means the value of x which gives the result of polynomial as a 0. Next topic is relationship between zeros and coefficient of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c. So अब हमें चेक करना है इनके जीरोस एंड कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है. तो जीरोस हमने डिस्कस किया अभी कि जीरो सच द वैल्यू ऑफ एक्स विच गिव्स द रिजल्ट ऑफ पॉलिनोमियल जीरो, कि एक्स की वो वैल्यूज जो पूरे पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या कर रही है, जीरो दे रही है. ओके, अब उन एक्स की वैल्यूज और से कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट ऑलरेडी यू नो द ए बी एंड सी. ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कांस्टेंट. तो इन ए बी सी थ्री वैल्यूज हैं और जीरोस है. कितने जीरोस होंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. तो कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे. तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, दैट विल यू हैव टू एस्टेब्लिश हियर. वो हमको यहाँ पे चेक करना है, हमको बताना है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अज्यूम द जीरोस. तो लेट जीरोस zeros are alpha and beta. जो टू वैल्यूज हमें मिलेगी एक्स से, जो दो रिजल्ट मिलेंगे उनको हमने अज्यूम कर लिया, एक तो अल्फा, सेकंड को बीटा. दीज आर सच सिंबल. इसी सिंबल्स है आपके जो वेरिएबल्स है, कुछ भी हम सिंबल अज्यूम कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड हम यहाँ पे यूज करते हैं अल्फा एंड द बीटा. ओके, सो वी हैव हियर टू रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट. फर्स्ट रिलेशन, sum of zeros, sum of the zeros यानी कि अल्फा एंड बीटा का सम, that will be equals to minus of coefficient of x divided by coefficient of x square. The sum of 0 is equals to coefficient of x divided by the coefficient of x square. It means sum of 0 alpha plus beta is equals to minus coefficient of x. X का coefficient is a b and coefficient of x square it means a. Second relation, product of जीरोस. जीरोस यानी जीरोस का प्रोडक्ट, अल्फा एंड बीटा का मल्टीप्लिकेशन, उनका प्रोडक्ट, दैट विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. The constant term divided by the coefficient of the x square. It means alpha into beta is equals to c upon a. So these are the two relationship between the zeros and the coefficients. Okay. अब how can we apply in the question and how can we solve the question? We will take a one example. So students, we have given the equation x square minus 2x minus 8. Question says find the zeros of the given polynomial and verify the relationship between zeros and then coefficient of polynomials. Okay, so first of all we have to find their zeros. So fx equals to x square minus 2x minus 8. Now how can you find the zeros? We have two method basically, hidden trial method, second the middle term splitting. Okay, so middle term splitting and hidden trial both you studied in the previous class, 9th class. Again we can revise them. तो बार से हम चेक कर लेते हैं आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. A, what is the value of A? 1. Value of B,
-2 and value of C is a -8. So for the middle term splitting, first step multiply the A into C. A और C को multiply करेंगे 1 into -8. The result is the -8. फैक्टर करने हैं हमें किसके -8 के. हम -8 के फैक्टर करने हैं कि हमें उसके 2 पार्ट मिले. कैसे मिले 2 पार्ट्स? 1 into -8 and 2 into 4. ठीक है, these are the two factors of 8, 1 into 8 and 2 into 4. कि इन दोनों का प्लस और माइनस करने पे हमें क्या मिलना चाहिए? B मिलना चाहिए. The splitting of A into C in 2 parts such that they give the result as a B. ठीक है, so 2 and 4 को अगर हम प्लस या माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? -2 मिल जाएगा. So here we will write the fx is equals to x square minus 4x plus 2x minus 8. We have split the -2x in 2 parts, -4x and plus 2x. Make the pair and taking the common, x is common, x minus 4, here 2 is common, x minus 4. So we obtain the x minus 4 and x plus 2 is the factors of polynomial. Now compare with 0. So we will say here x minus 4 equal to 0. So x equal to 4 and second factor x plus 2 equal to 0. So x equal to -2. So we obtain here two values of x equal to 4 and x equal to -2. अब इन दोनों वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे? जैसे हमने प्रीवियस बोला अल्फा. सपोज अल्फा इज 4 एंड सेकंड बीटा इज -2. दीज आर द टू जीरोस. जीरोस हमने फाइंड कर लिए हैं. ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या आता है? रिलेशनशिप. वेरीफाई द रिलेशनशिप. तो रिलेशनशिप कितने रिलेशन बच्चे? 2 रिलेशन है. फर्स्ट है सम ऑफ द जीरो, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a. तो चेक करते हैं. LHS अल्फा प्लस बीटा 4 -2 2 and RHS -b/a. So b the value -2 minus already है upon a the value 1 minus become the plus. So relation is verified. Second relation product of zero, यानी कि अल्फा बीटा is equal to c/a. So LHS alpha into beta, alpha and beta, 4 into -2 -8. RHS c/a. C the value -8 upon a the value 1. So we again obtain the -8. So relation is verified. So that is the process to solve your questions. Okay. So now let's start your assignment exercise and try to solve the question. If you have any problem, write in the comment box or WhatsApp on the given number.